Namaste. Myself Abhinandini. Namaste, myself Ajinkya. Every person is born with different properties or proportions of doshas. This non pathological increase in doshas remains constant throughout his life. That is Prakruti. Prakruti is composed of two words, pra plus kruti. Pra means begin or before, and kruti means creation. It is person's individuality or personality. प्रकृती प्रकृतिर्नाम जन्म मरणान्तराल काल भाविनी गर्भ व क्रांति समये स्वकारणात् उद्रेक जनिता निर्विकारणी दोष स्थिति means prakriti is the act which take place in between the birth and the death of an individual at the time of the fertilization by the predominance of unvitiated dosha. According to Charaka Sutra Sthana 21st chapter 12th shloka, prakriti deha janaka bija means originator of the human body. Prakriti is of two types, Sharirik Prakriti and Manas Prakriti. Sharirik Prakriti includes Vata Prakriti, Pitta Prakriti and Kapha Prakriti. Manasic Prakriti includes Satvik, Rajasic and Tamasic. So let's discuss about Vata Prakriti in this video. Acharya Charaka has explained the characters of Vata Prakriti in Vimanasthana 8th chapter as वातस्तु रूक्ष लघु चल बहु शीघ्र शीत परुष विशदः तस्य रौक्ष्याद् वातला रूक्ष अपचित अल्पशरीराः प्रतत रूक्ष क्षाम सन्नसक्त जर्जरा स्वरा जागरूकाश्च भवन्ति लघुत्वाद् लघु चपल गति चेष्ट आहार व्याहारः चलत्वाद् अनवस्थित संधि अक्षि भ्रू हनु ओष्ठ जिह्व शिरः स्कन्ध पाणिपादाः बहुत्वाद् बहुप्रलाप कंडरा सिरा प्रतानाः शीघ्रत्वाद् शीघ्र समारंभ क्षोभ विकाराः शीघ्रत्रास राग विरागाः श्रुतग्राहिणो अल्पस्मृतयश्च शैत्यात् शीत असहिष्णवः प्रतत शीतक उद्वेपक स्तंभाः पारुष्यात् परुष केश श्मश्रु रोम नख दशन वदन पाणिपादाः वैशद्यात् स्फुटितांग अवयवाः सतत संधि शब्दगामिनश्च भवन्ति त एवं गुणयोगाद् वातलाः प्रायेण अल्पबलाश्च अल्प आयुषश्च अल्प अपत्याश्च अल्पसाधनाश्च अल्पधनाश्च भवन्ति। कृश रूक्षशरीर हिताहितं सुखं दुःखम् आयुस्तस्य हिताहितं मानं च तच्च यत्रोक्तम् आयुर्वेद स उच्यते। जागरूक चपलगति चेष्टा आशु आहारकारी चलत्वाद् अनवस्थित संधि अक्षि भ्रू हनु ओष्ठ जिह्व अनावस्थित पाणिपाद चलत्वा बहुप्रलाप कंडर सिर प्रतान शीघ्र समारंभ शोभ विकाराः शीघ्रत्रास राग विरागाः कृतग्राहिणा साक्षी सप्तधातु के प्राकृत कर्म का श्लोका बोलो। प्रीणनम जीवनम लेपो स्नेहो धारण पूरणे गर्भोत्पादश्च धातुना श्रेष्ठ कर्म क्रमत स्मृतम। अल्पस्मृतयश्च हमने सुबह प्राकृत कर्म और सप्तधातु का श्लोका पढ़ा था, याद है क्या? प्रीणनम वाला ना, प्रीणनम जीवनम लेपो, प्रीणनम जीवनम लेपो शीत असहिष्णुवः परुषकेश परुषश्मश्रु
ಪರುಷನಖ, ಪರುಷದಶನ, ಪರುಷಪಾಣಿಪಾದ, ಸ್ಫುಟಿತ ಅವಯವ, ಸತತ ಸಂಧಿ ಶಬ್ದಗಾಮಿನ, ಅಲ್ಪಬಲ, ಅಲ್ಪ ಆಯು, ಅಲ್ಪ ಅಪತ್ಯ, ಅಲ್ಪಧನ. Acharya Shushruta has explained the Anukatva of Vata Prakriti as Vatikascha Ajagomayu Shasha Akhu Ustra Shunam Tata Grudra Kaka Khara Adi Nama Anukaihi Kirtita Naraha. Aja, slender body, low strength, constant movement, eats frequently. Shrugala, deceiving others, has selfish nature, complexion is dusty, has unstable eyes. Shasha, small body, fearful nature, full of anxiety. Akhu, fearful but cruel nature, thin, small and dusty color. Ustra, tall and slender, dry and rough voice, rough skin. Shva, active, small, undernourished body, quarrel, harsh and rough voice. Grudra, ugly, wicked, cruel, cunning nature. Kaka, ugly, dry, harsh, rough voice. Khara, dry skin, rough voice. Acharya Sharangadhara has explained the characters of Vata Prakriti as Alpakesha Krusho Ruksho Vachalaschala Manasaha Akashachari Swapneshu Vata Prakrutiko Naraha.